अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं अबाउट द सेलुलर एडाप्टेशन। ठीक है, तो हमारी बॉडी के जो सेल्स है दे आर कंटिन्यूसली एक्सपोज टू द स्ट्रेस एंड टू डील विद द स्ट्रेस द सेल शोज एडाप्टेशन इन द फॉर्म ऑफ हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफी एंड मेटाप्लेजिया। सेलुलर एडाप्टेशन को हम डिफाइन करते हैं एज द एडजस्टमेंट ऑफ अ सेल विद इन अ नैरो लिमिट्स टू द एनवायरनमेंट टू प्रिजर्व द वायबिलिटी ऑफ द सेल इफ द स्ट्रेस कंटिन्यूस। तो इसमें सबसे पहले हमारे साथ आता है हाइपरट्रॉफी। हाइपर मीन्स एक्सेसिव एंड ट्रॉफी मीन्स ग्रोथ। तो इसको हम डिफाइन करते हैं द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल एंड द हाइपरट्रॉफी अकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द protein synthesis. ठीक है, and hypertrophy involve those cells which have limited capacity to divide, like at most commonly occur in the stable or the permanent cells. ठीक है, जिसमें डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती। ठीक है, so it include the skeletal muscle cell, the cardiac muscle cell, the nerve cell, etc. And the hypertrophy may be physiological or the pathological. ठीक है, physiologically the examples include pregnancy, puberty, and body builders. And pregnancy there is increase in the size of the breast and the uterus occur. ठीक है, इसी तरह हमारे साथ during puberty there is also hypertrophy of the breast and the uterus occur because of the increased level of the hormones like estrogen and the progesterone. इस तरह हमारे साथ जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ड्यू टू द वो एक्सरसाइज और द इंक्रीजिंग वर्कलोड देयर इज द स्केलेटल मसल हाइपरट्रोफी का। इस तरह हमारे साथ जो हाइपरट्रोफी होती है इट मे बी पैथोलॉजिकल and the pathological include the non-neoplastic and the neoplastic. The neoplastic hypertrophy include the endometrioid cancer that involve the endometrial hypertrophy. इसी तरह हमारे साथ जो फाइब्रॉइड्स होते हैं फाइब्रॉइड्स include the smooth muscle hypertrophy of the myometrium. And the non-neoplastic example include hypertension. And the hypertension causes compensatory लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, क्योंकि हाइपरटेंशन में हमारे साथ जो ब्लड वेसल होते हैं वो कंस्ट्रक्ट कर जाते हैं एंड द वर्कलोड ऑन द हार्ट इंक्रीजेस due to which there is compensatory hypertrophy of the left ventricular curve. ठीक है, and the causes of the hypertrophy include hormonal factors, growth factors, or the increased demand or the increased workload. ठीक है, तो hypertrophy simply क्या है? It is the increase in the size of the cell and it occurs because of the increased protein synthesis and it may be physiological or the pathological. दूसरा हमारे साथ आता है हाइपरप्लेजिया। ठीक है, तो हाइपरप्लेजिया क्या है? हाइपर मीन्स इंक्रीज एंड प्लेजिया मीन्स नंबर। तो हाइपरप्लेजिया इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल ड्यू टू द माइटोसिस और द सेल डिवीजन एंड हाइपरप्लेजिया involve the rapid division of the cell or the production of the cell from the stem cell. And the hyperplasia may also be physiological or the pathological. And physiological hyperplasia, the examples include pregnancy and puberty, in which there is the increase in the number of cells of the breast and the uterus occur because of the increased level of the estrogen. इस तरह हमारे साथ compensatory hyperplasia भी है। लाइक अगर हम एग्जांपल ले लें, if one lobe of the liver is removed, ठीक है, तो जो remaining lobe होता है it regenerate the lobe again. ठीक है, and the regeneration depend upon the stem cell and liver. In case of liver, these stem cells are the cholangiocytic cell. ठीक है, इस तरह हमारे साथ hyperplasia may be pathological, like it include the endometrial hyperplasia which occur because of the prolonged stimulation of the estrogen and it occurs due to imbalance of the hypothalamic pituitary ovarian axis. तो hypothalamic pituitary ovarian जो एक्सेस है उसमें अगर इम्बैलेंस आ जाए, एस्ट्रोजन लेवल जो है ना हमारे साथ कंटिन्यूसली राइज हो, तो उसकी वजह से हमारे साथ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया काज होता है एंड दिस हाइपरप्लेजिया इंक्रीजिंग द रिस्क फॉर डिस्प्लेजिया एंड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। इसी तरह हमारे साथ जो बीपीएच है स्टैंड फॉर बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, तो इट इन्वॉल्व द ट्रांजिशनल जोन ऑफ द prostate gland and the testosterone. It is converted into dihydrotestosterone, which act on the androgen receptor and it causes the stromal and the glandular proliferation of the prostate gland. अब हम आते हैं about the atrophy. तो atrophy जो है ना it is the decrease in the number of the cells and the size of the cell. And the atrophy occurs because of decrease in the protein synthesis or increase in the degradation of the protein. So decrease in protein synthesis occurs because of the nutritional deficiency and increase in protein breakdown occur due to the ubiquitin mediated protein degradation by the proteasome. These proteins are attached with the ubiquitin molecule and are then destroyed by the proteasome. Now the types of atrophy. It includes the ischemic atrophy which occurs because of the decreased blood supply.
The second one is immobilization atrophy. The example include misuse atrophy of the muscle, ठीक है, ड्यूरिंग द फ्रैक्चर ऑफ द लेग्स एक्सेट्रा। इसी तरह हमारे साथ प्रेशर एट्रोपी भी है, जो कि कार्टिकल एट्रोपी ऑफ द किडनीज का एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ न्यूट्रिशनल एट्रोपी भी है, सीनाइल एट्रोपी भी है, विच इज़ द एज रिलेटेड एट्रोपी, ठीक है। इस तरह हमारे साथ हार्मोनल एंडोक्राइन एट्रोपी भी है, डीनर्वेशन एट्रोपी भी है, ठीक है, तो जिसमें से हमारे साथ मसल की डिजेनरेशन होता है। एंड द एट्रोपी में बी फिजियोलॉजिकल और द पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल इंक्लूड द एट्रोपी ऑफ द नोटोकार्ड and the pituitary or the atrophy of the ductus arteriosus. And pathological examples include cerebral atrophy, which occur because of the ischemia, ठीक है, a decrease in blood supply, or the cortical atrophy due to hydronephrosis, the cortical atrophy of the kidney because of hydronephrosis, in which there is a blockage of the urine outflow occur and the urine collection occur, which causes increased pressure in the renal pelvis and causes degeneration of the cortex of the kidney. अब हमारे साथ लास्ट वन आते हैं मेटाप्लीजिया। तो मेटाप्लीजिया को हम डिफाइन करते हैं द चेंज इन वन एडल्ट सेल विद अनदर सेल टाइप टू डील विद द स्ट्रेस। The metaplasia involve the transition from one type of epithelium to another type, which is more resistant to the stress. तो मेटाप्लीजिया में क्या होता है कि हमारे साथ epithelium change होता है, transition of epithelium occur from one type to another type, which is more resistant to the injurious stimulus. And the metaplasia may be connective tissue metaplasia or the epithelial metaplasia. The connective tissue metaplasia is irreversible, and examples include myositis ossificans, which involve the replacement of the muscle cell by the bony cell. The epithelial metaplasia is irreversible, and the epithelial metaplasia is reversible. And the example include chronic smokers, in which the normal ciliated columnar epithelium of the respiratory tract is replaced by the stratified squamous type of epithelium. And the stratified squamous epithelium has the advantage, the advantage of more resistant to the toxin molecule, but this stratified squamous epithelium lack the cilia, ठीक है। तो हमारे साथ जो सीलिया क्लियरेंस होता है वो नहीं होता, ठीक है। तो मेटाप्लीजिया क्रॉनिक स्मोकर्स में क्या है, कोलमनर एपिथेलियम से स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में होता है, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लीजिया इरिवर्सिबल है, एपिथेलियल मेटाप्लीजिया रिवर्सिबल है, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ बेल्ट एसोफेगस, तो बेल्ट एसोफेगस occur because of the recurrent gastroesophageal reflux disease, and it involve the metaplasia from the squamous epithelium into the columnar type of epithelium that involve the mucus secretion. इसी तरह the metaplasia also occur because of vitamin A deficiency, which is required for the epithelial differentiation. And vitamin A deficiency, there is no differentiation occur, which lead to the metaplasia, like keratomalacia of the conjunctiva, that involve the metaplasia to the keratinized squamous type of epithelium. Normally जब हमारे साथ metaplasia होता है तो the metaplasia leads to the development of dysplasia। तो dysplasia में क्या होता है कि disorganized growth of the cell होता है और सेल की जो polarity है वो भी लॉस होती है, ठीक। and the dysplasia then proceed toward the neoplasia, ठीक है, which is the abnormal uncontrolled cell division of the cell।